जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, ये इशू तब रेज हुआ जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अप्रैल 2003 में पब्लिश हुआ. बाय दिस ह्यूमन जीनोम इज completely open to everyone. Now, what is genetic discrimination? When people of different races, different ethnicity are treated differently. Now, keep in mind that genetic discrimination is based on the individual genotype. It is not based on the individual merit. When I say on the individual genotype, it means I am talking about the individual genetic makeup. Now, there is a term known as genism. This term is coined about the distinctive human characteristics and capacities which are determined by the genes. By genes, we can easily say that whether the patient is having a genetic disorder or he or she in future will suffer from any sort of genetic disorder. Now, sometimes gene testing becomes very important, especially in the workplace. Let's take an example of beryllium. If the patient or the individual is beryllium sensitive, then he or she may suffer from chronic beryllium disease. इन पेशेंट्स में HLA-DRB1 जीन कॉमनली पाई जाती है. ये जीन HLA यानी कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 में प्रेजेंट है. अब जीन टेस्टिंग अगर कंपनीज रिक्वायर करती हैं तो इससे पहले हमें चाहिए कि वर्कर से कंप्लीट कॉन्सेंट ले लें. देन जीन टेस्टिंग मस्ट बी एक्यूरेट. इट शुड नॉट बी ओपन टू एवरीवन. It should be discussed with the worker only, and if the worker is suffering from any genetic disorder, then we can allow the worker to work by reducing the toxicity level of that environment. इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने भी ह्यूमन जीनोम इंफॉर्मेशन ली और अगर पता चले कि इंडिविजुअल जेनेटिक डिसऑर्डर में मुब्तला है या फ्यूचर में ये जीन्स म्यूटेट कर सकती हैं, देन हेल्थ इंश्योरेंस कैन रिड्यूस द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस और दे कैन डिनाई टू गिव द इंश्योरेंस टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. Then there is a term known as popular culture or genoism, that is, genetic discrimination is something illegal, it is something unethical. So why people are not following the law? जब लोगों को ब्लड देने से डिनाई कर दिया जाता है तो वो आपके सिंपल हेयर सैंपल, आपके फिंगरप्रिंट से भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. सो हाउ मच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज सेफ आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? So Freeman said, "My father was right. It did not matter how much I laid on my resume. My real resume was in my cells." So genetic makeup is very important in giving up the genetic information. Genetic information आपके करिकुलम विटी में यानी कि आपके CV में नहीं है बल्कि आपके सेल्स में प्रेजेंट है.